हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए डेडिकेट किया है सो दैट आई विल एक्सप्लेन यू। मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाई योर रेडियो इज़ नॉट इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन। लाइक इसका रेंज ज़्यादा क्यों नहीं जा रहा है when the company is claiming that it's supposed to work for like 1 kilometer or 2 kilometer. You're also seeing videos of people communicating on YouTube जो कि 20 किलोमीटर का communication they are claiming, या फिर they are claiming to like use it on different repeaters up to like 70 kilometers. Then why your radio set fails to work even for 200 meters? आपका रेडियो 200 मीटर भी काम नहीं कर रहा। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा रीज़न है, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट वन। सबसे पहले एग्जामिन करें कि व्हाट काइंड ऑफ रेडियो यू हैव। यूजुअली पीपल हु आर नॉट हैविंग द हैम लाइसेंस, जिनके पास हैम लाइसेंस नहीं है, they are mostly using the radio which is supposed to be on working on D-license frequency, जो कि D-license frequency पे work करेगा. For example, this radio. This is a radio which is license free, 446 PMR, and the requirement for 446 PMR is that it shall have ERP of 500 milliwatt, which is 0.5 watt of ERP, and then integrated fixed antenna, non-programmable, and shall work on 446.0 to 446.2 megahertz. So this is it. Low power radio, which means this is only for 0.5 watt. इसका इनबिल्ट जो है पावर वो ऑलरेडी बहुत ही लो है, and it is very effective. If you are using this radio in open space, it's very effective. It will work for one kilometer as it is claimed. लेकिन यूजुअली होता क्या, whenever we are using the radio, जब हम लोग रेडियो यूज़ करते हैं तो these radios are used in urban environment, जहाँ पे काफ़ी सारे trees होते हैं, building होते हैं, even if there are like cars और ऑटोमोबाइल होते हैं आसपास, तो इनका जो रेडियो वेव्स है they are being absorbed. ये UHF पे काम करता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, और UHF रेडियो वेव्स दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एज लाइक VHF रेडियो वेव्स. दे आर गुड फॉर शॉर्ट कम्युनिकेशन. तो ये जो है ये आपका सारा का रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड दिस इज़ द रीज़न आप कोई भी रेडियो ख़रीदते हो और उसमें लिखा होता है क्लेम दैट ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर काम करेगा, और जब आप उसे ख़रीदते हैं तो वो हार्डली 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर काम करता है, बिकॉज आप उसे ऐसे इन्वामेंट में यूज़ करते हैं जहाँ पे वो सारा रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब हो जाता है. ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी के आसपास जहाँ पे आपका वायरिंग है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स है, टावर्स है, रेडियो टावर्स है, और भी मोबाइल नेटवर्क टावर्स है, उनके भी वजह से ये सारा जो है इसका कम्युनिकेशन एफिशिएंसी जो है इफेक्ट होता है. दूसरा प्रॉब्लम है इसका एंटेना. These antenna it's very small stubby antenna. इसमें एक अंदर पर coil spring होता है, and this is why the power is very low. ये ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं कर पाता. Even if it is using 0.5 milliwatt radio frequency power, still it's a lot of power. It shall be able to communicate for very long distance. But ये जो antenna जो है integrated, it restricts it. ये इसे लिमिट कर देता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा ही आदेश दिया. गवर्नमेंट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ दैट फॉर PMR frequency you should not use a strong antenna. It should be used for low power device, short range communication, and therefore the antenna should be integrated. Therefore ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका रेडियो जो है बहुत ज़्यादा दूर तक कम्युनिकेट नहीं कर पाता है. बट स्टिल इट शुड बी वेरी इफेक्टिव अगर आपका रेडियो जो है PMR फ्रीक्वेंसी पे है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड है. अब बात करते हैं आपकी यूजुअल स्टैंडर्ड रेडियो की, जो आपकी बाफिंग की रेडियो है. जैसे ये आपका PMR पे नहीं, मैंने इसे प्रोग्राम किया है, जो कि FRS और GMRS फ्रीक्वेंसी पे ये प्रोग्राम्ड है. तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? सेम प्रॉब्लम इसमें भी एक स्टबी एंटेना है, छोटा सा कॉइल स्प्रिंग. देयरफॉर इसका पावर बहुत ज़्यादा नहीं है. लेकिन लोगों ने इस रेडियो को रिपीटर के साथ कनेक्ट करके, बेस रिपीटर के साथ कनेक्ट करके, दे हैव कम्युनिकेटेड अप टू 70 किलोमीटर्स. देयर इज़ अ चैनल यू कैन कंसल्ट, Ringway Manchester. You can see his videos. He has done a great review on this
little radio, and he has communicated using this radio, hitting the local repeaters up to 70 kilometer. तो repeaters को hit करना is different than communicating from device to device. Most of the time, people who are not ham licensed or amateur radio users, they usually communicate from device to device, and therefore उन्हें लगता है कि ये तो this one, particularly this one, it doesn't work beyond 200 meters if I'm using device to device in urban area, even in open space. But this one, it's much better than this one compared to this. I have tried this one and it didn't work properly. I thought this will work up to like 1 kilometer, but it did not work. It worked few hundred meters. But again, like I said, this antenna makes a lot of difference. This one compared to this radio, it has maximum power of 1 watt, and it is a lot of power, 1 watt, but because of the limited antenna, it is unable to communicate effectively. But if you're using repeaters, this is a great radio. On the other hand, this radio cannot be used with repeater because it's a civilian radio, it's a PMR, therefore it cannot be used with a repeater, simply device to device usage. Most of the people who are buying Baofeng radio on Flipkart, they have no idea, उनको कोई भी idea नहीं whether those radios are legal or not. Baofeng radios sold on Flipkart, Amazon, Snapdeal, they are not legal to possess if you are not having a ham license. अगर आपके पास ham license नहीं है, those radios are illegal even to possess. And if you're using them, most likely you're going to interfere, different communication frequency which has been allotted by government to different agencies, including police or medical services or railways or operating services. So I will suggest you not to use those radio. If you are using them, then make sure that you buy a programming cable and then program them on 446. That way you will not be interfering with any of the government frequencies. However, you won't be able to use it publicly because that does not have ETA, equipment type approval. So that's a different topic, but just telling you that even if you are buying radio for PMR and if it doesn't work up to the claimed distance, then don't worry, it's not the fault of radio, it's the fault of the environment where you're operating it. So it is like that. It's very common that these radios with the limited antenna, it's not going to work. So this is it. If you have any questions, अगर आपके पास कोई सवाल है, you can just put it down on the comment box and I'll be glad to reply. Thank you very much.